Hello students, grade 8 mathematics. You all are welcome. Happy morning. Topic exercise 8.2 continue. Last time we have stopped. I think question number 5, right? So from page number 125, please open the textbook page number 125 where question number 6 is. We just start from question number 6. So here exercise 8.2 1, 2, 3, 4 and 5 we have done last time. Now question number 3 start from this. In this question number 6, where during the sale a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the items. So what would the customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850 per each? So students, here it is the solution of this question number 6. It is our sum. Discount percentage is given 10%. We have to find out SP. Total mark price is given. Total mark price like this way it is given. The jeans that mark price is 1400. He purchased two items 1450 rupees and two shirts each 850. Means एक का 850 तो दो का कितने का, राइट 1700 और 1450 का जीन्स और दो शर्ट तो टोटल मिला के 3150, राइट टोटल मार्क प्राइस. Okay, then now here D percentage is there. Immediately you have to find out discount. So discount is equal to D percentage multiplied by MP upon 100. Use this formula from our formula list. And here you simplify, you will get discount 350. Okay, then next formula, you have to find out SP. So SP is equal to MP minus D, or you can say discount. That is formula number 16. So our MP that we just found 3150 and our discount just now we have found 315. So total we got 2835 rupees SP. So our answer, what would a customer have to pay? A customer have to pay, here is the answer. The customer will have to pay rupees 2835. Students, move to question number 7. A milkman sold two of his buffalo for each 20,000 price. One he made a gain of 5% and other buffalo he lost of 10%. So find overall his gain or loss. Okay. So here is the solution, right? Now here deal 1 and deal 2 दो बार डील है, राइट. बफेलोज लेता है, राइट. उसका सोल्ड प्राइस आपको दिया है. यू सी बफेलो मिल्कमैन सोल्ड यानी एसपी. सो हियर वी पुट एसपी इज इक्वल टू 20,000 फॉर ईच. पहली डील में बफेलो का प्राइस हर एक का 20,000 है, लेकिन पहली डील में उसको प्रॉफिट मिलता है 5%. अनदर डील में उसको लॉस मिलता है 10%, राइट. सो लाइक दिस वे वी कैन काउंट. उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. बराबर ना, आपको क्या ढूंढना है? कॉस्ट प्राइस, बिकॉज एसपी दिया है, राइट. तो कॉस्ट प्राइस, so when SP and percentage is given, we use which formula? Use formula number 12. So when SP and percentage is given, you use formula number 12. So like this way you can implement the formula, right? फॉर्मूला तो आता है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करने का वो आपको देखने का, क्या ढूंढना है और क्या दिया है, राइट. हियर SP and percentage is given. You see in this term SP and loss percentage is given. So at that time you use formula number 14 and here formula number 12. You see in our list, right? लास्ट वीडियो जो आपने लिखा होगा आपकी बुक में, राइट. ये सब आपको लिखना है अपनी बुक में, राइट. So use do it for calculation. 20,000 into 100 upon 100 plus 5. So you will get this. You will guess 40. You will get 4 lakhs upon 21. So when 4 lakh divide by 21 करोगे आप, डिवीजन आप अपने आप करो, you will get this answer 19047 mean 1947 rupees points 6192, right. But you have to make after decimal 2 point only. 612 means roundabout value 62. So approximately value of CP 19,047 rupees point 62.
Okay. Similarly here 2 lakh divided by 9, you will get this value approximately 22,222.22, right? Okay. So total CP कितना हुआ अभी? Total CP is equal to वो 19,462 plus next time 22,222.22. So if you add it, you will get 41,269.84. Here I have added this. Then total SP, total CP, you got total SP 40,000 because 20,000 and 20,000. Now in our deal, you see total CP 41 something here. Your ye 40,000. So CP is more. CP is greater than SP. So in our deal, what is there? Loss is there. So loss is equal to total CP minus total SP. So when you do this subtraction, you will get 1,269 rupees 0.84, correct? So this is the final answer. So the final answer is the overall loss of Milkman was 1,269.84. Like this way, question number 8, you students see CP is equal to 13,000 rupees, sale tax दिया है 12%. So first of all you have to find out the sale tax amount. Sale tax amount कैसे लगता है? जो आपका जो टोटल पैसे होते हैं, टोटल प्राइस है ना, टोटल कॉस्ट प्राइस उस पे लगता है. So 12% ऑफ टोटल सीपी कितना है? 13,000. So इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 12 into 13,000 upon 100, 0 कट, you will get 1,560. Here I have do the calculation besides. Okay, so the bill amount or required amount to pay is equal to, कैसे पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स. तो टोटल मिला के कितना हुआ? 14,560. So Vinod will have to pay rupees 14,560 for TV. Now the next point, that is here, the next point is compound interest. Students, before start compound interest, we have to see its formula. Okay students, here you see the listing of formula of simple interest. Simple interest SI is equal to PRT upon 100, that you have studied in 7th standard, where P is the principal amount, R is equal to rate of interest which is given in percentage, and T means term, either given in month, year or days, and A is equal to amount. So that one formula, that is SI is equal to, or I equal to PRT upon 100. This is 1.1. Next formula, A is equal to P plus SI. Second formula. Now if you count the compound interest CI, then you have to find out first amount. Okay, here this is the amount. Amount A is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power of T. Correct? And then you find out CI. CI is equal to A minus P. Okay. Now, in compound interest, the bank will give you the interest either in yearly or day wise also, or half yearly also, or quarterly also. So if the interest is counting by, in our problem it is written there. Here you have to count the interest by half yearly. So at that time our formula is what? A equal to P into 1 plus R upon 100 upon T. तो यहाँ आपको क्या करना है? हाफ ईयरली मीन्स R इक्वल टू R बाई 2 रख देना है, और T इक्वल टू 2T, बराबर. हाफ ईयरली यानी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ्स के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो 1 ईयर में 6 मंथ कितनी बार आते हैं? 2 बार. दैट्स वाई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट R बाई 2, R से R बाई 2 तो R बाई 200 हो जाएगा, और T यानी 2 इंटू टी बराबर 1 ईयर होगा तो 2 टाइम्स, 2 ईयर होगा तो 6 मंथ कितने आते हैं 2 ईयर में? 4 टाइम्स, बराबर. तो 2 2 जा 4 ऐसे. सो यू यूज व्हेन हाफ ईयरली, यूज दिस फॉर्मूला 2.2. And suppose the interest is counted quarterly, you have to use this R equal to R upon 4 और T equal to 40 लिख देना है बस. Here you see A equal to P 1 plus R upon, yeah, R upon 4, quarterly means 4, divide by 4, 400 raised to 40. Simple. Okay.
Okay, let's start example number 10, page number 126. Now where principal amount is given 10,000, rate of interest 15% is given, t equal to 2 years. Here you have to find out simple interest, not compound interest, and amount. So you have to use I equal to PRT upon 100. So put the values and simplify. You will get, here you will use the formula number 1, and here A equal to P plus I means formula 1.1 you use. Okay, 10,000 plus 3,000 interest, you will get total 13,000. Very easy. Here is the sum to find the compound interest. Read this sum. A sum of rupees 20,000 means P is given. Principal amount P equal to 20,000. जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे लिखते जाओ यहाँ. P equal to 20,000 rupees. Is borrowed by Hina for 2 years. यानी अभी T दिया है. तो T equal to 2 years. Right? At an interest of 8%. यानी R is given. R 8%. Interest of 8%. कंपाउंडेड एन्युअली. कंपाउंडेड एन्युअली मीन्स आपको क्या ढूंढना है? कंपाउंड इंटरेस्ट. लिखेगा ही, वो लोग लिखेंगे कंपाउंडेड एन्युअली. फाइंड सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट सी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 years. राइट? तो सी आई ढूंढना है. सी आई ढूंढेगी तो पहले क्या करने का? यू हैव टू यूज फॉर्मूला नंबर 2, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टी. बराबर. ये तो ईयरली ढूंढना है इसलिए कोई बात नहीं. तो वैल्यू रख दो 20,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस, है ना, आर का वैल्यू 8 अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 2. अभी देखो यू हैव टू काउंट दिस टर्म फर्स्ट. 1 प्लस 8 अपॉन 100 उसका एलसीएम लीजिए. राइट? अगर एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 8 अपॉन 100 एलसीएम होगा. सो लाइक दिस वे. तो 108 अपॉन 100 इसको आप सिंप्लीफाई करिए. यू विल गेट 27 अपॉन 25 होल स्क्वायर. बराबर. इसके बाद देखो. So 20,000 into 27 upon 25 whole square. Correct? Means 20,000 into 27 upon 25 into 27 upon 25. You make it cancel. 25 8 za 800 za 20,000. Then 25 800 za. Here I have given the division. Right? You can see the division over here. Then you will get 32, 27, 27 in the numerator. Make it multiply sequentially and you will get the amount 23,322 rupees. 28 rupees, sorry. So now here you have find out the amount. Now you find the CI. CI is equal to A minus P. So you will get 3,325 rupees. So your answer is compound interest is 3,328 rupees and amount is 23,328 rupees. Now example number 11, page number 129. Here amount is equal to question mark. You have to find out some compound interest question mark. Now principal amount 12,600 is given. Rate of interest 10% is there and term is 2 years is there. Right? So like this way you can put the value. Correct? And as per given my instructions you have to do the calculations. You will get 15,246 rupees. So now CI is equal to A minus P. So 15,246 interest is 12,600. You will get 2,646 rupees. Now here try this page number 129. It is the homework for you. Okay, when compounded half yearly, if the interest is compounded by half yearly, use formula 2.2. देखो मैंने बोला ना कि r इज इक्वल टू r अपॉन 2 रखना है और 2 इक्वल और t इज इक्वल टू 2t रखना है. तो देखो मैंने यहाँ रख दिया है. बराबर. एंड लेट्स सॉल्व दिस सम वेयर यू हैव टू काउंट द इंटरेस्ट हाफ ईयरली. तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिख देने का. राइट? तो टर्म दिया है 1 इंटीजर 1 अपॉन 2. तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 ईयर्स. R 10% दिया है. P 12,000 रुपीज दिया है.
use this formula. It is compounded half yearly है बच्चों, so you have to use this half yearly formula. A is equal to P into 1 plus R upon 200 raised to 2T, है ना. अभी अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया तो वो फॉर्मूला रख दो हाफ ईयर में, इतना ही है, बाकी तो द सेम प्रोसीजर, रिमेनिंग ऑल आर सेम. ईयर देखो 12,000 1 plus 10 upon 200 raised to ये 2 into T 3 upon 2, here 2 cancel, so it becomes 3. So 210, बराबर, LCM लो तो 210, तो ये सिंप्लीफाई करोगे 21 अपॉन 20 रेस टू 3 मीन्स 12,000 21 अपॉन 20 तीन बार आपको लिखना है बिकॉज पावर 3 है. सो आप करोगे ये बराबर कैलकुलेशन. यार मैंने साइड पे कैलकुलेशन भी किया है, राइट. सो यू विल गेट अमाउंट 13,891.50. Okay. Page number 130 students, try this, find the time period and rate for each. Here you have to find out the time period or rate. तो आपको मालूम है ना, when it is compounded half yearly, t equal to 2t and r equal to r upon 2. तो वहाँ पहले सम में आपको दिया है t equal to 1 इंटीजर 1 upon 2 ईयर, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. यू विल गेट 2 into 3 upon 2, 2 cancel, you will get time period is equal to, you will get time period equal to 3, and here r equal to r upon 2, so 8% is there. So in first one 8 upon 2 4%, simple. Second sum here t equal to 2 years दिया है, r equal to 4%. So as per our that half yearly formula, t equal to 2t रखना है, तो 2 into 2, that is 2 into 2 means 4, so time period is equal to 4, और here r equal to r upon 2, here 2%. So question number 1, it is a try this, so it is homework, do from home. Question number 2, try this, where you find out quarterly, बराबर. तो क्वार्टरली में क्या करने का, t इक्वल टू 40 लेने का और r इक्वल टू r अपॉन 4, यूज फॉर्मूला 2.3. हियर इट इज अ सॉल्यूशन. यू सी a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 400 रेज टू 40, बिकॉज इट इज यूज फॉर्मूला 2.3, ये मैंने लिखा है बराबर, बिकॉज हियर ये क्या है, इट इज अ इंटरेस्ट काउंटेड बाय क्वार्टरली, बराबर. तो लिखा ही होगा, बाकी था कैलकुलेशन वो तो एज इट इज है, बराबर. बाकी आप बराबर इधर से आप कॉपी कर सकते हो. एंड दिस ये मैंने हाफ किया है, यू हैव टू डू इट कम्प्लीटली, बराबर. डू योर कैलकुलेशंस बाय योर ओन वे, प्लीज कंप्लीट बाय योर ओन वे. So please complete this calculation by yourself. Now exercise 8.3, there are some homework. Up till now whatever the sums that we have done, like that way you can find this. Question number 1, homework A, B, C, D and E. Question number 5, question number 6, 2 part, and question number 7 and question number 9. Okay, so till then have a nice day. Goodbye.